हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज विद मी शेफ अफराज ऑफ ब्रेकफास्ट में अक्सर हम सोचते हैं क्या खाएं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है एंड विच यू कैन ईट इन अ गो। यस, यू हर्ड मी राइट, all the coffee lovers are going to love this especially. Why? Because I'm going to make a lovely coffee granola. So very quick recipe. So let's start with it. First I'm going to grab a large bowl और सारा काम इस bowl में ही होगा and then the oven will do its work. So bowl में काफ़ी nutritional चीज़ें डालनी है, तो oats, honey. So oats, I'm going to use rolled oats or these are also called old-fashioned oats. Morning breakfast के लिए काफ़ी अच्छा होता है. To the oats I'm going to add walnuts. उसी के साथ साथ pumpkin seeds, quite high in omega-3. Almonds. So इसमें आप जो मन चाहा आपके जो ड्राई फ्रूट्स है, आप जो खाना पसंद करते हो, you can add that more in quantity. But I prefer a mix of all. So ये इसके अंदर आ गया. Looking nice and colorful. और इसे हेल्दी बनाने के लिए I'm going to add some puffed quinoa. Yes, quinoa is really healthy and a superfood. तो आजकल puffed quinoa काफ़ी मिलते हैं, तो it is very easy to add in such cereals and consume. And now the star ingredient, as I said, coffee. So around 3 teaspoons of this. This will give a nice kick. And coffee lovers है जिनके दिन की शुरुआत कॉफ़ी के बगैर नहीं होती है, इफ़ दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट यू आर श्योरली गोइंग टू लव इट. सो ये आ गया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं. साथ ही साथ चिया सीड्स, अब इसके तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है, गुड फॉर वेट लॉस एंड ऑल्सो इन एवरी डे डाइट यू शुड इंक्लूड सम चिया सीड. इसी के साथ साथ फ्लेवरिंग के लिए आई एम एडिंग सम ग्रीन कार्डमम पाउडर, सम cinnamon पाउडर and a pinch of salt. ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर. Now to bring this all together, I'm going to add little melted butter, and to sweeten this, I'm going to add honey. And now it's time to mix everything well. Honey is going to work like a glue. सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके आ जाएगा वो, and this will be very easy for us to bake then. This coffee has given a nice lovely color. वो हल्का सा brownish color जो आपको लग रहा है. For now this is done. It looks good. Let's get a baking tray. So here I have a baking tray lined with a parchment paper. बस अब कुछ नहीं करना, इसे spread out कर लेना है इसमें. And just spread this out. If you want to make the bars, you just need to add some more binding to this. You can add little bit of condensed milk. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से bind कर लेगा इसे. And you can compress this in a small baking tray. And when you bake that, you can easily demold and cut it into bars and take it wherever you want. Office लेके जा सकते हैं, school लेके जा सकते हैं, अपने short break में खा सकते हैं. So all you need to do is just follow this simple recipe, and it's going to do wonders. So ये हो गया है. I have already preheated my oven at 180 degree Celsius और अब मैं इसे बेक करूँगा करीब 20 से 25 मिनट ओवन में. तो चलिए इसे रख देते हैं ओवन में. The smell of coffee, the smell of honey and the oats being roasted and toasted of the nuts smells very nice. I'm going to let this cool for a while until it become nice and hard. At this moment it would be little soft, but as it cools, जैसे ये ठंडा होगा ये हल्का सा कड़क हो जाएगा and then we can store it in an airtight jar. So now after a while, as you see, it has cooled down completely. ठंडा हो चुका है. अब इसे हम ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से. So small bits of granola. और अब इसे स्टोर कर लेते हैं एक एयरटाइट जार में. So you can actually crumble this. और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप इसे एक छोटे
टिन में या ट्रे में बेक करोगे तो यू कैन ऑल्सो कट दिस एंड रैप इट एंड टेक दिस वेरेवर यू वांट. Nice and crunchy as you can hear from the sound. So ये हमारा यहाँ पे ग्रानोला तैयार हो चुका है. You can double the quantity if you want and you can easily store this. करीबन 1 से 1.5 महीने ये अच्छी से cool place में रह सकता है at room temperature. और बस इसे क्या करना है, जब मन चाहा इसे थोड़े fresh fruits और milk के साथ consume किया and that's a very kick start for a day. So चलिए अब कहाँ है फ्रेश फ्रूट्स एंड मिल्क के साथ सर्व कैसे करेंगे. तो लेट्स मेक अ नाइस ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इट. ग्रैब अ बोल एंड उसमें हमारा ये ग्रानोला डालते हैं. सो हियर यू हैव अ नाइस बोल ऑफ ग्रानोला. आई हैव सम फ्रेश फ्रूट्स हियर, सम बेरीज. तो इसे हाफ में कट कर लेता हूँ. सम नाइस फ्रेश स्ट्रॉबेरीज or whatever berries are there in the season, you can add those. जो भी आपके मन पसंदीदा fruits है उसे add कर सकते हैं. Let's take one banana and peel this. Let's slice the banana. So let's add the bananas, strawberries, some fresh mint leaves, and to top this up, I'm going to get some milk. So this is the best way to have it. I'm adding chilled milk. You can add warm milk to this. You can add almond milk. You can add oats milk. You can add any milk of your choice. Just add this. And let's quickly taste. You can hear it is nice and crunchy, and with the fresh fruit, it's awesome. As I said, the coffee lovers are going to love this because you're getting the coffee flavor from it, and it's a complete meal for the breakfast. If you have this one bowl, I'm sure till the lunch आपको ज़रा भी भूख नहीं लगेगी and you won't feel that hunger anymore. So काफ़ी आसान है, simple है. Do try this recipe at your home, and if you like it, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to our channel Sanjeev Kapoor Khazana.